Not streaming. And good morning, G. How are you feeling? Good. Okay, so we're good. So let's serve. Oh, one day the gun. One day the gun. Let's find out. Coat. Sorry, guys, doing morning rituals of my everyday setup to the office, environment setup. So takes a little bit time, 5 minutes or so. My aim daily is to be live in front of you guys by 9 a.m. So all right, Zoom is on. Everything is good. Just set up my stream. Your desktop or laptop? All right, so the environment has been set up.
October 23rd-2. मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उनको कॉल कर लें, वो आपको वो ये टीवी माउंट पे लगा देंगे। ये नैव जो है ना, ये जरा थोड़ा सा ढीला है, तो मैं इसका नाम है RGS Canada L contact search RG camera है जी क्या वो आएंगे तो दोनों चीजें RGC camera SG तक क्या था और SG मेल करोगे और जरा पेन चेंज करना आईडी प्रोडक्ट आईडी हाँ मैं तो नहीं ईमेल कर दूँ 30 सेकंड ईमेल लिंक पे concept. No problem, sir. All right, guys, let's do this. Now, sorry, man, आपका mic लगा दूं. Mic. ये ले जाओ. आपका mic. All right, good morning, everybody. Thursday, October 23rd, 9:07 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to SuperAreas.com. Thank you for coming in person as well as online at Will Lifetime. Let's get started. And I'll be with you. I'm your host for today. I'll be with you for the next 3 hours until 12 p.m. Eastern. And anything I share is not financial advice, just for informational, educational, entertainment purposes. And I will be guiding along with one of 8 mentors that I am here. Myself and Majid Bhai sit here in this room to analyze 3 markets: gold, NASDAQ, and ES. Let me just get started with my Bloomberg and CNN. Professional office, part of a company since 2008. Just a junior analyst looking for a bit of a bummer news. This morning, I woke up and Take Profit had disabled 4 of my accounts, and Copier had a glitch yesterday, actually the day before,
and I went long on 2 MGC or 1 MGC, and then I reversed and I went on short on the other two. So four pro accounts kind of got disabled on me. How much money lost? Not really. 90 times four, which I recovered. I'm recovering from the other. So it's the time lost of 8 trading days, $25,000 account. So please don't take profit. You're not allowed to hedge. Hedge means you can't go long on one account, short on the other account. And you can't even long on short within the same account. Maybe yes is so. Just be very careful of their rules of take profit, their system. I am fighting the ticket because I've told them, hey, this was on accidental, and I did long. I hit reverse. What I was supposed to do is let that trade go, and then maybe hit close and then reopen it. So what happened was I went long and I just hit reverse. So whenever you hit reverse, things kind of go opposite direction immediately. So what does a reverse button do in trading? It just closes the current trade and reopens in the second direction, other direction. So reverse button kind of is a bit tricky to work with. So so if you're in a trade, generally on a live account or any account, reverse button just basically, if you're long, hitting it skips a step. So the reverse button will do close a long trade, reopen it in the short direction, saves you time. But if you're on a copier, if you're on a funded account like Take Profit, they I've done that many times. It's not something that it's new to me. But in this instant, what happened was two accounts did get reversed, but the other, so they were still, they closed their long position and went into the short position, but two accounts did not. And that kind of triggered their alert of take profit. And they said, well, you're hedging. And I said, okay, no problem. It's a so just be careful when you're using the reverse button on copier. So nothing to worry. I still have because the $25,000 accounts were a little annoyed, but that's about it. Nothing to worry. Happens to the best of us. Whatever doesn't kill you just makes you stronger, and then you get to know what things are. So what's my plan for today? As usual, I'll open my notebook, start looking at the plans for today. Today is 23rd October. First thing is first, Forex Factory has news, but I'm not picking up any news at all because 23rd October 2025. And uh, most likely plan would be high to go low, but yesterday Tesla's earnings weren't bad, so Tesla fell down from 420 and it's 430 and it's trading right now at where is it trading? 438. Actually went back up. No, 423. So I remember Tesla is down. So it closed at 439 and it is trading at 423. So Tesla is down $15, almost 4%, 3.5%, right? So just be careful. Market could open because now yesterday's orders of stocks and everything are going to start coming in at 9:30. So we could have a bit of a volatility. First thing is first, let's look at some NASDAQ. What did NASDAQ do? Earnings today, you just have Blackstone and a few other companies, nothing major. Now, end of October, you have those companies like Tesla, not Tesla, Apple is coming in and others. So if you look at 20, what is important for us, exactly a week from today, you have Apple, Amazon, Microsoft, Google, Meta. So end of October, we're going to see a bit of a volatility. But nothing major today in terms of trading. Should be okay day, but base is down, pressure is down, opening below PP. So let me just quickly do night session highs and lows. So high, it went as 25,128. So far,
and low 24,937. 937. So that kind of pushed $200 move. I'm considering S1 to be done. Like, so when the alerts came somewhere, the S1 is considered done for me. So let me double check S1, log in, MNQ, refresh. So yeah, S1 is, so we are in S1, below S1. So I am still standing at 24,650. That's my plan for NASDAQ for today. If it goes to 24,650, I'm going long personally. So NQ, let's write some numbers. Let's, first thing is we write pivot. The 25,075, 76 our pivot, 24,000, sorry, 25,075. I'm going to put that as a pivot number. Where am I going to go long from? NQ, MNQ, 24,650. So 24,650. I'm planning to go long, but I'll still wait for Daniel's brief to make a bit of an understanding. Where are we? For ES, I'll ask Majid Bhai to take over and give his brief. So, and then I'll tell you gold after. Hello, good morning, everyone. Today the base and pressure is down, so we're going to stay in selling from top. High to go low will be the best thing. So I'm looking like it's below the pivot point, NASDAQ and ES, both of them. So R1 will be a good sell for both NASDAQ and ES. So if I have to sell, I'll sell from R1 area and S2 for buying. Nothing much. Rafay explained everything already. He covered. We all wait everything. for Daniel's Yeah. brief first before we do anything. We're just gonna wait for Daniel sir to for his analysis, and we'll go from there. Yes. So yes, R1 and S2 for ES. Buy from S2 area, and then if I have to sell, it's gonna be R1. Yeah, R1 work good because Yeah. our value is area is there Exactly, too, right? exactly. So Yeah, so that's so what- R1 because also value area is there, top. That's falling in within 67, 65. 67, 65. Yes, and then we have a value area. So a few things that I write down, personally speaking, is if you somebody can see my notebook right here. So I'm writing down 5 or 6 numbers daily. Highs and lows, pivot, that's 3 for NASDAQ. And for ES, high, low, value, top, and bottom. So that's 5 for ES. So value area bottom is 6706. So most it should test the value area. So S2 आप कह रहे हैं जी S2 and R1 आपने yes का this is Majid Bhai's bias. I agree with him. That's what IR doesn't matter, goes up or down. We scalp for a few dollars. That's all our kind of. We don't hold our position. Maybe so. Too much brightness, sir. Full bright. मैं ये सोचा था कि नहीं ठीक है. we have the banners, right? If we can just, I can make one today and just like Dennis sir having this. नहीं कोई बात नहीं. सूरज पड़े विटामिन डी मिले हमें. So 6695 92 should be okay. S2 का थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि ऑर्डर कहाँ लगे हुए हैं 60 मिनट के नीचे. जरा डैनियल भाई के ब्रीफ आ जाए. So क्योंकि remember yesterday's low is 90, right? So it could go and test yesterday's low. So yesterday it fell at 6690, right?
So, and yesterday's low of NASDAQ is 805, right? So $470 move came yesterday. So this violation of take profit really burns. It's not really. NASDAQ will test 25 120. आ जाएं सर, आप इधर आज के बैठ जाएं, मैं उधर चला जाता हूँ, या आप स्ट्रीम खोल दें. तो What exactly happened with that? नहीं है. No, I mean the take profit. नहीं टेक प्रॉफिट में हुआ क्या कि मैंने कॉपियर लगाया था 4 अकाउंटों में 25,000 वाले. तो उधर जाके जो है ना, मैंने क्या किया कि लॉन्ग में था, तो मैंने रिवर्स का बटन दबाया क्योंकि मैंने शॉर्ट जाना था. तो मैंने कहा एक स्किप कर देता हूँ. जनरली होता है आप लॉन्ग में जाएं, क्लोज करें, फिर शॉर्ट करें. मैंने रिवर्स दबाया तो 2 रिवर्स हो गए और 2 लॉन्ग ही रहे. वो हेज में आ गया. तो वो हेज में आ गया. Yes, I can't show my face on D-Star. Let me figure it out who you are and let me find out. It's okay. भाई आईटी में गोल्ड मेडल ऐसे नहीं ले लिया, आपको ढूंढते हैं. अब आपने चैलेंज दिया है कि आप हैं कौन है. डी म्यूजिक स्टार चैलेंज जी, ठीक है जी. नो प्रॉब्लम. नहीं कुछ नहीं, वैसे कह रहे हैं, अपने एनालिसिस दे रहे हैं. मैंने कहा स्ट्रीम खोल लें, हम ज्वाइन कर लेते हैं यार. हम तो मानने अतात करने वालों में से हैं यार. आप तो आप कहें जो होगा बिल्कुल होगा यार. इट्स ओके. मैं तो किसी से डिसएग्री करता ही नहीं है. कहते हैं सिर्फ सारों को सिखाना चाहिए ऑनलाइन बैठ के, लग पता जाता है 3 घंटे बोलना. What value can you short? NASDAQ, I am planning to short somewhere around 25,000 and एक सेकंड जी, मुझे सिर्फ अगर यहाँ से 988 पहली वैल्यू है 180 25,180 25,180 पे पहला शॉर्ट बनेगा जी. Because that's R1 and last week's high. Let me double click on this to find out. So if you look at 240 chart, just double click on that and it's all designed. So last week's high, prior week's high is 25,180. More chances that price will go down because you already have Tesla that's down $15. But so long position, 650 will give you some points. Should. I never say will because so NASDAQ 24,650, NASDAQ 24,180. That's my hit and run for 650 should give us more points, but 180 hit and run. 24,000. I keep saying 25,180, which is the previous week's high. So GJY Pro Valuation. Good morning. Gold. Let me ask gold. Wait. Let me give you gold number. Wait for gold. 60-minute gold पे पहले देख लें, फिर 30 पे देखते हैं. एक सेकंड. R1 hit and run. Yeah, R1 is hit and run. Okay, मैं आपको we are not in Brampton, we're Mississauga जी. 2 ऑफिसेज हैं, तीसरे में हम मूव हो रहे हैं. सोन ढूंढ रहे हैं जगह ब्रैम्पटन में. सो हमारा प्रॉपर ऑफिस है. अभी आपको टूर कराते हैं कि हम उस तरह के ट्रेडर नहीं हैं जो
ट्रेडिंग भी करते हैं, हम सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं। ये बहुत फर्क होता है बी और ही में। कुछ लोग खाली ट्रेडिंग भी करते हैं तो वो 50% ट्रेडर है, और जो ही करते हैं वो सिर्फ काम ही यही करते हैं, उनका और कोई काम ही नहीं होता। जैसे सर एंड सो ऑफिस है, 7 दिन खुला होता है, क्लासेस होते हैं। अभी डैनियल भाई की ब्रीफ है, CEO है, वन मैन शो नहीं है। मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं है जो भी ऑनलाइन सिखा रहा है यार, एक मैन शो ना हो। कल मैं यहाँ ना बैठा हूँ तो आपका सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए। माजिद भाई छुट्टियों पे हैं, या मिस्टर हैप्पी, या 8 मेंटर्स हैं, 30 का स्टाफ है, मैं एक जूनियर मेंटर हूँ इधर, 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, माजिद भाई इधर 8 साल से हैं। सो we never, it's a proper corporation, that's a proper school, and we are not a one person show, because what happens with the one person show, that person is not there, you have no idea how to. सर मैं S2 नहीं लूंगा जी, जितन भाई, मैं पर्सनली S2 NASDAQ में नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ प्रो ट्रेडर भी मिस्टेक करता है, कल हैज हो गया ना गलती से, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट। प्रो का मतलब क्या होता है भाई? प्रो का मतलब होता है सुबह दोपहर शाम। अगर मैं प्रो लिखूं, उन्होंने मेरी फीसें CME ने बढ़ा देनी है, मैं नॉन प्रोफेशनल हूँ जी। तो जब हम ट्रेडोवेट पे साइन करते हैं वो नीचे लिखा होता है नॉन प्रो। आई जस्ट रीड दिस डैम थिंग्स टू मच, दैट्स ऑल देयर इज टू इट, और मैं खुद से नहीं बनाता। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? गोल्ड, गोल्ड थोड़ा सा रुक जाए। गोल्ड आपने लेना है जी 4200 पे सेलिंग करूंगा जी, GC 4200 पे मैं पर्सनली सेल रखूंगा। वाई? 60 मिनट के हमारा एक्सपेक्टेड हाई क्या? 4220, लेकिन 42 एन ऑड नंबर है, 30 मिनट के मिड बैंड से बाहर जाएगा तो अपर बैंड। तो गोल्ड के लिए मेरे पास 4200 है, पहले कुछ स्कैल्पिंग 4200 से मिलनी चाहिए हमें। फिर रिमेंबर कहाँ से आ रही है नीचे? गोल्ड आ रही है बहुत नीचे से, 4025 से आ रही है। 24 Harry has a fib box too. 24, yes, ये देखें, ये कल के बॉक्सेस हैं जी, ये कल के बॉक्सेस। ये बॉक्सेस कल के आए हुए हैं 240 में जो। जी वालेकुम सलाम राजा साहब आए हैं। और कल मैं लाए सी बड़े मजे की गल राजे की वीडियो सी कि वो कहता मैं राजे खाली टींडे नहीं खाते, शादी ते बुलाओ ते बच्चा था। हाँ वो बच्चा जी कहता खाली राजे टींडे नहीं खाते, शादी ते बुलाओ ते गोश्त भी खा लेंगे ने। भी बुलाना ही पड़ना है। सैटरडे को हम लोग सोच रहे हैं, आर यू टेकिंग एक्सपेक्टेड लो? यस सर, एक्सपेक्टेड लो के अंदर भी एक नंबर है 650 का, हमारा जो जोन है ना, क्योंकि फिब के बॉक्सेस वहां खत्म हो रहे हैं, ग्रीन बॉक्सेस का एंड 650, तो रिस्क लेना है तो जरा ठीक लेंगे ना। तो $200 मेरा रह गया 50 डे के अकाउंट को, फिर आज जरा पे आउट शुरू करें इससे सब। So valid is today, but the bottom number S2 नहीं, S अगर देखें मार्केट अभी खुल जाएगी ना 4 मिनट में, तभी डैनियल की ब्रीफ आने वाली है, and then I will see कि क्या हो रहा है। Let me just connect the mics over to the bridge. Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Microphone check. If you can hear me, guys, microphone check. Please, guys, let me know if you can hear me. Assalamu alaikum. Thank you, Ammar. Thank you. Ikesh, thank you. Good morning. Ikesh, Tamur bhai, Abbas bhai, walaikum salam. Good morning. Vikas, Majid, Manish, good morning. Tariq bhai, Balraj, Amir bhai, Rizwan, Clifford, ji, good morning. Preet, ji, good morning. Jagdeep ji, Samir, good morning. Good morning, everybody.
Quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or on our training floor not intended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decision, but not make it for you. And we take no responsibility at all for any action taken by any subscriber. And you're solely responsible for all your profit or losses. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses. And do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you treat all the areas we have on our SuperAreas.com or on our graphs, and not buy and sell offer or buy and sell advice or any type of financial advice. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility at all for any action taken by any subscriber. Today, our S&P 500 done for the day from S1, NASDAQ done from S1. It went slightly below S1, but we knew that if S&P at S1 and NASDAQ is a little bit below, S&P will take NASDAQ to the upside. So from 937 to almost, you can say, very close to 80 plus points on NASDAQ, and S&P 500 exactly hit our 20 area, actually 2 ticks below and went above almost 19 to 20 points pushed to the upside. Today, base is down, pressure is down. The best is high to go low. Keep eye areas on R1, S1, R2, S2. Why? Because no news today. Existing home sales is coming, green to go up, red to go down. In housing data, only one news, that is existing home sales, one green to go up and red to go down. Why? Because it's already existed. It resale of the previous old homes. So green to go up and red to go down. Today, our S&P 500 expected high is 68.12 to 25. Our low for S&P 500, 66 to 66.53. NASDAQ, our high is 25,400 to 480. Low for NASDAQ is 24,720 to 620. Today, crude oil, big push to the upside on our crude oil. Why? Because U.S. Sanctions two big oil company, Russian oil companies, and that's why the crude oil, huge push to the upside. But that is good for us. Why? Because we don't care prices going up or down. We will go with the areas and we'll go with the trend. So right now, S&P 500 bounced back from S1. Russell 2000 S1, Dow is not moving at all. Even if you see from 12 a.m. the retracement we had to the upside 30%, it's not giving us any higher low or lower high. It's just flat. Dow is dead flat. And NASDAQ very nicely bounced back up a little slightly below from S1 and then pushed to the upside. Euro session, Euro. If we look at our British pound, flat, sitting at PP area, at open, actually British pound went down. Test our low, that 1 o'clock low. And yesterday, British pound bounced back from our expected low for the day. And very nice, beautiful push to the upside. But right now, nothing but in doldrums, sitting at PP. Pressure is down. Remember, pressure is, base is down, but pressure is building to the upside right now. And euro, same thing. First it pushed down after 8 a.m. If you see after 8 o'clock, it just pushed to the upside. 1.5 hour euro break. Our whole night high, night session high got break by our euro. Just half an hour. And Canadian dollar is going up. If you remember yesterday, Canadian dollar went up to our expected high for the day. And from expected high came down 52%. And right now above PP in value area, look like Canadian dollar will go up. Why? Because of crude oil. Remember, the same Swiss franc is backed by gold. Canadian dollar is backed by crude oil. If crude oil goes up, Canadian dollar will go up. If crude oil goes down, Canadian dollar will go down. So right now, in between PP and S1 area, our Canadian dollar 29 will have the interest rate cut, and after interest rate cut, we'll see a push to the upside on our Canadian dollar.
Crude oil expected high for the day is down $62, and overall, actually it went up $3 from night. But if I see the swing, we have $5.77. That's in a humongous push to the upside. I'm talking about the swing low we had on October 21, actually 22, when it started, our week start and push to the upside. So huge push. Minimum expectation is somewhere 59 to 58, 60 area. Then we have FTX. FTX went to our expected low for the day yesterday, and from expected low bounced back up 60% and came down 180 points, and right now below PP, but push is to the upside. Gold is up. Gold or above PP. Look like we might see our expected high for the day. Gold today, but gold yesterday went down. No, I'm talking about bigger swing was 77.20 cents less. So 377 went back up 40%, $153, and came down $150 yesterday, and today it went up 94%, $141. Who can imagine one day will have this much push? It's crazy. It's amazing push to the upside. So, and then we have our copper. Copper is going up. Copper went up 18 cents. That's a big push from our yesterday low area. Actually, day before yesterday, low area, and right now sitting above R2 area, and look like it will might hit our expected high for the day. Overall 18 cents, but the 18 cents is big push to the upside. Silver $1.88 push to the upside. Silver and gold, everybody know it's moving in the same direction. So silver is up. Silver look like $50.25. This is what I'm expecting for our silver to go up. And right now in between R1 and R2 area. Natural gas is coming down. Natural gas previously went up crazy. If you remember, not even a month ago, I said I'm expecting $4. So further, we are hitting the cold weather. So further, our natural gas will go up. But right now, natural gas came down 13 cents after I'm talking about the retracement that we had 3 a.m., 2 to 3 o'clock yesterday, and then it paused. Whole night it was paused. And then 1.5 hours it came down. The whole push we had to the downside is in 1.5 hours, and a beautiful push to the downside. And right now at S1 area, I'm talking about our intraday S1 area. Bitcoin above green midband yesterday went up $3,505. Retrace back down, not much. Hold by midband and push is to the upside on for our Bitcoin. And Bitcoin after second week of November, we'll see crypto will get a very big push to the upside. And then in end of December or January first week, January first week, second week, you will see cryptos will come down. Why? Because people spend that money in December. They will sell their cryptos to pay off their bills, and we'll see a push to the downside. And then after March, April, again rally to the upside. So right now, sitting at R1, our Bitcoin, and Ethereum above PP hit our R1 area, $171 retracement out of $385 push to the downside. So we had a 44% retracement on Ethereum. So this will be an extension to the upside if price is breaking 39.12 area, 39.12 area. If it breaks, and then we'll see a push to the upside. So today, keep eye on these four markets: S&P, NASDAQ, Dow, Russell 2000. Why I said keep eye? Because S&P 500 striking price is still low. Remember, it's at low, and all three markets are striking price move up. When your striking price move up, price always go and test that area,
but that area will push market to the downside. So very soon I'm expecting S&P price move to the upside. As soon as it move up, it means our trend is fully to the downside. You must pay attention to striking prices because these are very strong indication your trend is up or trend is down. I'm talking about long term, like 2 days, 3 days, 1 week. So please guys take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. Good morning, Lakhani ji. Good morning. You're welcome, Clifford G. All right, guys, that was the brief. There's Telegram still has audio. I don't see. Give me a second. Very nice. So we're almost at pivot of our price is almost at pivot of 240. If you look, it's hitting. Let's see if it will test our night session high of 128. So our night session high is, let's see, still waiting. So price is testing the pivot point right now. $2 more, $5 more, and we are at pivot for NASDAQ. She's trying. There you go. We are right at pivot right now. So I touched our pivot and it's giving some maybe, let's see. Let's see if it can break night session. Kind of all because Mr. Daniel does 15 markets for you guys. High to go low is the strategy. By the way, pivot gave you 6 points. Just saying. Pivot, PP trade, 6 points are done. 10 points are done from pivot, from 75 to, but that's a very little scalping on pivot. So let's see if it goes and tests our night session high. So pivot trade is 7 points from pivot. Somebody got, congratulations. That's, there you go. So 75 to 65, 10 points on pivots are done. You different markets, so it's breaking pivot. So let's see if it tests night session high. Remember, our night session high is 128. So first, PP is very strong support and very strong resistance. So it's testing PP on NASDAQ. नहीं तोड़ रही जी, अभी नहीं तोड़ रही. 2 3 4 ट्राई किए हैं, PP को नहीं तोड़ रही. ES already break PP. Now she's trying to reach night session high. Okay, ES has done PP. Let me double check. Yeah, that guy. Yeah. So ES is at a 60-minute mid band right now. So 67.48. So our night high candle is closed at 128. Just remember. Right. Show your screen. Face enough नहीं है. मेरा account block करना है. Telegram में जाएं, सब कुछ मिल रहा है भाई. TikTok में account brain. Show my screen. I don't want to scroll up कर जाएं यार, आपके लिए नहीं है. Easy to swipe up. Oh, मेरी एक लेवल मेरा 42 है, मेरा अकाउंट बंद करवाएंगे. शो योर स्क्रीन. फिर मैं बार बार गुस्से हो जाता हूँ. लोग प्रॉफिट्स को नहीं बख्शते. नहीं दिखानी स्क्रीन, जो मर्जी कर लो जी, आ जाओ. नहीं दिखानी. और टेलीग्राम में जाओ, वहां दिख रही है, लाइव स्क्रीन दिख रही है. All right, guys, PP trade is done. If you took PP trade, you're done. So it gave you 10 points from pivot. There you go, Daman Singh Sahib. Thank you very much.
PP 10 points done. So because it came from quite a bit far. It came from all the way from 930. So if you scalped 5 points, 10 points, that's done. So let's wait for 180 now. 25,180. 10 points done. There you go. So now let's slow down now. Pivot, 10 points are done. Congratulations. So it's trying to break pivot. NASDAQ is. It's hard though. It's like 4 attempts to break 75. ES needs a bit of a retrace now. We gotta come down to at least test if it wants to make it. Give me a second. Where can it fall down to? Pivot somewhere around 25. It should come and bounce and test it. Let's see. Pivot नहीं तोड़ पाई 4 attempts किए हैं pivot पे NASDAQ के. There you go. It's done. ES at night session high. All right, now this time it broke pivot. Yeah. So let's see if it tests your night high of NASDAQ. R1 is not safe for NASDAQ, right? सर R1 think होनी so? चाहिए. मैं Right. 180 पे इसको रुकना चाहिए क्योंकि लास्ट वीक का हाई 180 था. Yeah. I'm new. What's my name? Check the profile, SuperAreas.com. Rafay ji now. So There you go. She's we're almost at a 30-minute mid-band of ES. So come on, push up. up it goes. So it's testing night high. Let's see. 128 is the night high. Teach Forex too. Sorry, what's the Telegram? Go on SuperAreas.com. Log in. You will see all the results. So it pushed up to 128. Not yet. 114. So it's about to test night session high of 128 NASDAQ. And ES is heading into R1. Let me open up my trades. Give me a second, rhythmic. ES is 99.5 overbought, $35 swing. So it should give us a bit of a retrace now. So that strength is showing how many mid-bands worked going up on ES. Let me double check those that are doing mid-band trades. First mid-band at 931, second mid-band at 935. And look at the write-up. If you just went along with trend trade, you're literally done. So never quite got to 128, got to 119. All right. Third pullback on ES is coming, the mid-band. Third mid-band is coming. Okay. Remember, it's gone up 34 points, so 30.20 needs a bit of a retrace. Gold, sell gold at 4,200 today. That should give us some points. There you go. Third pullback, mid-band is done. It has given you guys from 50 to 55, 3 points. So ES third mid-band is done.
It Oh, is yeah. done. Third Beautifully mid-band done. ES is done. For those doubting mid-band trades, ES ka third mid-band is done. 1, 2, 3. Now this candle, there you go, third mid-band, and we are positive. Great. Now we have an SRES building. Let's see. Value area की तरफ जा रही है. R1 is there. So Night high was 128, and we got as high as 121. Close enough. 124, very close to overbought हो गई है. Yeah. It's almost overbought. So and as ES is Yeah, overbought. yes. ES अब ES को अब गिर जाना चाहिए. उसने 124 टेस्ट किया, बस 125 से वापस आ गई. So done for the day. Congratulations. I hope so. Oh no, a lot of Dobaरा people. ना खोल दें. 125. Let's see if it tests night session high. Almost there. Yes. I think he did, right? नहीं Yeah, there you go. non हो गया ना. break हो गई जी. Test Yeah. हो गई. 130. Mid-band को break किया, then R1. Yes. So NASDAQ has tested night session high now. Let's see if it's enough time. But wait for NASDAQ for 180 though. Because R1, previous week's high is R1. It will go and test R1. So 3 candles are closing above for 240. So there you go, our area is coming. ES is almost close to R1. NASDAQ has some time to go. NASDAQ is not done yet. Because remember, people do buy the dips. Tesla is down. Only thing is red is Tesla, but everything else is green. So gold is up. There you go. We are hitting our R1 very soon. $158. ES is inside R1G. Come on, एक टिक से रह गया काम. NASDAQ got to previous. Give me a second. Right now, it's highest point of yesterday, midpoint of yesterday. So we're inside the value area, touching top. 68 से इसको निकलना चाहिए. थोड़ा सा bounce देना चाहिए on ES retrace. So ES went up from where to where? From S1 to all the way 67.19 to 66, 67.66. ES area is done, G, almost. 67.66. If you're done ES areas, congratulations. ES area is done. There you go. There you go. You're done your ES area. Just shorted. Perfect. Trail. If you were going long, this is where you had to exit. So it may go and retest it. So ES area is done. From 65 to 62, 3 points on ES area is done. Our R1 is officially done on ES. NASDAQ, what's the dollar gap?
110 divided by 25, almost 4, which is good. That's the way it's supposed to be. I wouldn't take this mid-band, by the way, on ES. Why? The swing has been $44 one way up, Yeah. which is 99.93. So 1510 could be risky if you say. So I'm just saying I'm skipping this mid-band. That would be the fourth pullback. Cool. Thank you, G. Congratulations. No, I've seen your nick somewhere else along the lines. Don't worry, I'll find and I'll message you on WhatsApp. There you go. I'm still in though. No, मैं तो ट्रेल कर रहा हूँ अभी. मैं ट्रेल कर रहा हूँ ES को. Same here. I'm planning to take 6 points from here. So this is, even though this mid band could work, but I'm not taking it. Just saying. And even though if it actually is working, but I did not take this trend trade. Yeah, because overbought on the other side, right? Yeah, it's severely overbought. So 30-20 read needs a retrace. Just remember, it could still go and test it, but from our ES 65 all the way down to 59, we got 6 points out of ES. Incredible. देखें जी ES आपके नोट्स में R1 और S2. R1 is done. This mid band worked too, by the way. Still gave you a few points, but I did not take any points on this mid band. Area is done. ES. NASDAQ is inside, very close to 180. Just saying. So now we need a retrace on ES. Because NASDAQ is pulling up, so ES got pulled up. So we're inside the area of NASDAQ, guys. So 5 minutes to go for 10 o'clock candle. So we got into 172 of our areas was the last, even that came from an area. Yeah, even that came from an area, but 30-20, look, it's 30-20 is severely overbought. So we are in 180 zone. Let's see. Does it give me something from here? 179, 180. Last week's high. Yeah, 180 is kind of done. Look, it came, I said 180, it came from 179.75. So kind of done हो गया जी. एक टिक से रह गया. अगर आपने जंप इन नहीं किया तो 180 में तो अब एक टिक इतना तो मुझे क्रेडिट दे देना कि यार एक टिक जहां हम कह रहे हैं वहां से एक टिक तो बन गया. हो गया जी. ट्रेड डन हो गया जी. 180 ES का भी हो गया सर. ES का भी हो गया. ट्रेड दोनों डन हो गया. आपको नंबर दिया था 25,180. सुबह जाके प्ले कर लें. डन हो गया आपका ट्रेड. डन हो गया जी. 180 से $100 निकाल लिए जी. आना शुरू हो गया. कंग्रेचुलेशंस जी. 5 points done. Congratulations. Congratulations. Everybody who tipped this 180 trade, you're done. I am done too. Yeah. So lucky for us. तो आपको 180 एक रीजन की वजह से दिया गया था क्योंकि वो रीजन थी R1 lower 10 points, 5 points done. So I'm done my ES and I'm done my
I got NASDAQ. 6 points. 6 Yes. points, 5 points, 10 points, done. Now अगले नंबर के लिए वेट करते हैं, वेट करेंगे। एक किसी ने एक सर पढ़ के ना अंधे हो गए हम लोग। पढ़ के अब यहाँ से भी ना पढ़ना आए तो फिर हमें छोड़ देनी चाहिए ट्रेडिंग, यार एनालिसिस छोड़ देना चाहिए। ट्रेडिंग तो डिफरेंट है। 178 से एंटर हुए जी, कुछ तो ठीक है, 20-15 पॉइंट ले लिए और क्या चाहिए यार। गिर रही है 10 points, done, definitely done. 3 points on ES, 115 point from NASDAQ, done. All right, so ESR1 is done. Today's दोनों ट्रेड अच्छे गए, ES के भी NASDAQ के भी। अब ये पुल बैक कर रही है, अब जिधर मर्जी जाए मेरी तरफ से। अभिषेक स्क्रीन से बाहर आ जाए, I don't care. Trade is done. तीनों मार्केट्स उन्होंने गोल्ड भी किया है। somebody was doing gold along with it. R1 15 points done जी। अब रुक जाएं, अब आपको अगला नंबर देते हैं, वेट करें। Okay, now the next number you should be selling, personally I would be selling from 305. Buy Nothing. number for ES is 67.79. आप जा रहे हैं 67.79 पे? Yes. 67.79. हेलो सर, क्या Sir told you to tell you. कंग्रेचुलेशन सर, आपको वेरी Congratulations. नाइस, कंग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस। सर्टिफिकेट आएगा ना तो वो ननु कर देना WhatsApp पे, right? Yes, you start. Very good. Good job, buddy. Good job. Vikram is doing good. Actually, he's the only one who's actually like आपके बाद he's active, right? He's also saying You gotta lead it for 3 hours. communicate people, Oh. right? You know, other Okay. mentors they're not actually. Value area R1 NASDAQ. I know some people were saying it exactly 80, but sometime you gotta give it a bit of a buffer. यार मैं अब trillions of dollars से exact तो नहीं निकाल सकता ना। Next candle open green. Next candle is open. अब देखते हैं कहाँ जाती है ये। All right. Now it should pull down slowly. News is no change. Yeah, news आने का फर्क भी नहीं है, वैसे गवर्नमेंट शटडाउन हुई है तो न्यूज आने से। Yeah, existing home sales, because we are waiting for tomorrow's data, CPI, but I don't know how much that data is. So happy हैं जी, happy हैं जी, ट्रेल करें, buy stop 2. What is the next value? Next value is जी 25,305 and gold for 4,200. लेकिन अभी ना करें, अभी थोड़ा सा रुक जाएं जी, अभी रुक जाएं। When to start taking mid band? जब 30-20 रेड हो जाए फिर आप मिड बैंड्स की तरफ आ जाएं। अभी 30-20 को रेड हो लेने दें, वहां पर एक SRES बन जाए, फिर नीचे की तरफ आए। अभी 30-20 में कुछ नहीं करना जी। 25,305 है जी अगला नंबर मेरा। लेकिन मैं नहीं कुछ कर रहा, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस का, गोल्ड का। अगला जो मेरा या 25,305 पे गई तो उधर देखेंगे, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। मुझे पिवट देखना है पहले आके कि पिवट सपोर्ट बनता है कि नहीं। क्या बन रहा है ईएस के ट्रेड के अंदर? थोड़ा सा डाइवर्जेंस बनी है, सो नाउ इट शुड गो डाउन,
180 से 130 पॉइंट कुछ ले सकते. Anyway, anybody who took it, couple of micros I'm still short on different accounts, but there you go. Trail. तो 4 मिड बैंड्स गए ऊपर जाते हुए, हमारा ट्रेंड टाइप सही चला और उसके बाद बाकी की चीजें. अब इसको नीचे उतर जाना चाहिए पहाड़ी से. R1 बड़ा ब्यूटीफुल 10 o'clock candle is 30 minutes is red, 60 minute, let's see. So it should go and test the 60-minute mid band. It should come down to at least 48. So that should, the word is should. So it's testing again to see if it wants to break previous week's high of 180. Let's see. It may test it again. Who knows? NASDAQ, ES 3020 mid band is tested and passed. %40 बुलनाक्स रूल सर ये है कि अगर आपने $4,000 बनाया है ना, तो एक दिन में लेट्स से जो भी टारगेट आपने सेट कर लें, जितना मर्जी पैसे बना लें, वो प्रॉब्लम नहीं है. तो एक दिन में 1600 से ज्यादा ना बनाओ. तो अभी आप कोई भी टारगेट सेट करें. लेट्स से 50K का अकाउंट होता है बुलनाक्स का और मैं जाता हूँ उसके अंदर थोड़ा सा what do you call it, 4100 का टारगेट होता है. So I want to make sure, so if you take 4100 in your 10 days or more to get to bullnocks, 40% target is don't make more than $1,640 in your bullnocks PAs. See, I have a $25,000 3 accounts जो अभी मैं आपके सामने live show कर रहा हूँ, and it has what do you call it, so I would like to get it to 3,100. 3,100 of profit divided by times 40%. So $496 मैंने maximum कमाना है, उससे ज़्यादा नहीं. तो अभी देखें थोड़ा 30-20 अभी retrace नहीं ले रही है, लेकिन अभी 30-20 is still. First pullback on mid band worked. Gap trade बनाया जी yes ने. Look, it made a gap trade. It touched mid band, none of the BBs or moving averages in a day. Correct, right? ये 24 घंटे में, 23 घंटे में. Correct. So you're not allowed to make more than 40% inside your. अब आ जा जी नीचे, आ जा तेजी से आ जा. 180 से 50-30 पॉइंट मिले हैं. तो जो भी आपका टारगेट है 40% से ज्यादा ना हो. तो हाँ. But another successful day, blessing of whoever you believe. हेलो सर, क्या हाल? हाँ जी. प्रॉफिट का मुझे अनसब्सक्राइब करना है क्योंकि इसको एक्स का दबा दें. ये जो उसको एक्स दबा दें तो हो जाएगा. कहाँ पे? मैं अभी आपको बताता हूँ. ये इसको यहाँ पर जाएं, इसके साथ ये एक्स. तो ये पास हो चुका है या फिर नहीं Okay. होगा अभी. So yes, डन हो गया. अभी फिर से करना है. Yes. लेकिन 29 तक चलता रहेगा, राइट? डेट है. नहीं, अकाउंट डेड है ना, तो अब वो ट्रेड नहीं करने देगा आपको. नहीं करने देंगे. नहीं, वो जैसे ही उसका थ्रेशोल्ड खत्म होता है वो अकाउंट नहीं करने देता. Yeah, no problem. If you're trailing like me, couple of micros, congratulations from R1. I'm done now. I'm still trailing couple of NASDAQs. जी. Kind of feel a little bummer of this hedging. This sucks. All right. मेरा होना ऐसा हमारा चाहिए कि जैसे ही हो गया ना ट्रेड बंद, स्ट्रीम बंद करो, कार जाओ.
लेकिन मेरी जॉब स्टार्ट हो, मेरी जॉब फिनिशेस एट 2 o'clock। ईएसटी क्या जबरदस्त और पेयर। सर मैं कहता हूँ 2 माइक्रो से सारा बुल नॉक्स भर गया। और वो देखें 180 का एक नंबर, एक देखिए 180 का भी नंबर है ना। ऑलवेज प्लीज रियलाइज गाइस, फॉर दोज दैट आर फॉलोइंग मी religiously, for God's sake, don't, because things can go in any direction anytime. We are just doing our mere analysis, right? So let's say if I tell you couple of micros 25 180, ठीक है नंबर है, लेकिन आपके फेवर में नहीं आता, तो आपको अगला पता होना चाहिए कि कहाँ से मैंने एवरेज करनी है, कहाँ से जाके मैंने इस फंसे हुए ट्रेड से निकलना है, कहाँ मैंने अपना स्टॉप लॉस लेना है। क्योंकि मुझे तो किसी का अकाउंट नहीं पता, कोई लाइव अकाउंट कर रहा है, कोई 10 पीए लगाए हुए हैं, कोई नहीं पता ना। लेकिन हम सिर्फ अपना मैथमेटिकल एनालिसिस देते हैं, और नो बेटर देन और नो वर्स देन एनीबॉडी। जो बड़े बड़े बैठे हैं वो भी इसी तरह कर रहे हैं, क्योंकि इट्स ऑल रोबोट्स ट्रेडिंग, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, मार्केट मूवर्स। So it's just our accuracy is high. We're still wrong 10% of the time. So it's not like another mid-band work, by the way, if you are selling. Because remember, it should go all the way to 34. First 48, but all the way to 34. Should, always is. So That's all news conference on sports betting probe. स्पोर्ट्स बेटिंग प्रोब। यार अभी कनाडा में जो बड़ा मसला है ना, हमारी जो टीम है ब्लू जेज टोरंटो की, मैं तो नहीं देखता ये गुल्ली डंडा क्रिकेट का बेड़ा। तो उसमें मैंने टिकट की प्राइस देख रहा था, $7,000 की एक टिकट। तो अगर आप टिकट मास्टर पे जाएं और ब्लू जेज की गेम नंबर 1 देखें ना, ओह माय गॉड, टिकट मास्टर डजंट मैटर, जब जितने ट्रेडिंग से पैसे बनाए इतने तो नहीं बनते ना यार कि आप एक टिकट 5,000 की लोगे यार। So let's take a look at the ticket prices. Toronto Maple Leafs. Let's search for Blue Jays. एक गेम खेलें वो और पैसे हम पे ही करें। मैं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि यार खेलते वो हैं, पैसे जिसे कहते हैं ना कि हमारे जाते हैं। सर आप लोग तो क्रिकेट देखने पे ऑस्ट्रेलिया गए। नहीं, एक फैन है ना, फैन का तो फिर देखें शौक दा मुल तो कोई नहीं होता ना, भावें चरस पीनी होवे भावें अल्कोहल, शौक दा कोई मुल नहीं होता। $100 मूव हुई है आपके फेवर में। और क्या चाहिए ना, ये साफ पे आएगी। Here you go. कुछ में मैं अब ट्रेल करके बाहर आया हूँ। या जो जितनी बड़ी स्विंग बैक दी रिट्रेस 180 से, दैट्स गुड। सर SuperAreas.com पे जाएं, 14 दिन की फ्री सब्सक्रिप्शन ले लें। वो आसान है, पहले देख लें कि हम करते क्या हैं। शायद आपको पसंद ही ना आए, पसंद ना आया तो हम क्या करेंगे आपको। हम कोर्स नहीं बेच रहे, सॉफ्टवेयर एक बनाया है
sell from S1. लेकिन यार S1 का सेलिंग कहाँ से होता है उसको? S1 तो सपोर्ट S1 दिया, से sell करता है। S1 तो पहले उसको टेस्ट कर लेना, लेकिन चलो आपने रिकवर कर लिया, दैट्स गुड, दैट्स ए गुड साइन. Again, R1 there is resistance in S1. Like another mid band is there. Blue box पहुंच गए हैं, so let's see if this mid band gives us something. So वापस जाती है टेस्ट करने. Another mid band going down. Now things are starting to be okay towards the downtrend. So trend trade में आपका एक पहला pull back official mid band done हो गया जी. Let's see if it breaks 46. It should really go down to 34 technically. लेकिन पहला mid band done हो गया जी. Bull knocks any limit for daily profit? Evaluation नहीं जी, evaluation में कोई limit नहीं है. ये 1 day pass है और Apex की सेल लगी है 90% की. कोड हमारी वेबसाइट पे पड़ा है. टेक प्रॉफिट का भी पड़ा है. Why did they give? Blue Jays, Toronto. Blue Jays versus Dodgers. देखें कितना प्यारा मिड बैंड चला जी. ट्रेल करते आए, अगर आप कर रहे हैं जी, सेलिंग का ट्रेड है, करते आए, बंद हो गया जी. ट्रेल करें जी, ट्रेल. आई एम ट्रेलिंग राइट नाउ. Mid of the done. Trade is done. It's not 90%, it's 80%. It's on SuperAreas.com. The code is there. SRES is building on, let's see. And again, it's top of the bar. It should still come down and break 46. Let's see. October को game 1 है जी. 2 tickets, limited tickets. Oof, $600. My God, man. पागल है लोग. एक टिकट लगा हुआ है $17,000 का. Wow. 17,006. चलें देखें जी, सबसे महंगा टिकट कितना? $1,100, $1,200, $1,000. My God, man. Lounge ticket starts at 17. बिल्कुल उसके पीछे बैठना हो ना. There you go. How beautiful this is. Just for understanding. Why did you say, सर देखें पिछला लोअर तोड़ना है ना, वो आपका ब्लू बॉक्स कहाँ खड़ा है जी, और रेड बॉक्स देखें वहां से आ रहा है. तो आपको पता है कि आपके बॉक्सेस ने उसने फिल करना होता है, तो कहाँ तक आ सकता है. लेकिन आप ट्रेल करें, दैट्स इट. वो देखें आ रहा है, जहां हम कहेंगे वहां तक आएगा, फिक्र ना करें. $23 ट्रिलियन को हम ही चला रहे हैं, और कौन चला रहा है? और सर मैथ है, मैथ है, मैथ है. दैट्स इट, नथिंग एल्स, जस्ट मैथ. ऑनेस्टली कोई क्रेडिट नहीं लेते, सिर्फ मैथ पढ़ी जा रहे हैं. because you have to understand the basics of it. The basic of it is, let's say if I'm a developer and I have written code to trade, like कि मेरे पास hedge fund man, मुझे आप $1 billion दे दें या 100 million दे दें या 10 million दे दें, और मैं फ्यूचर्स की मार्केट को एनालाइज करके एक रोबोट लिखता हूँ,
तो उस रोबोट के अंदर मैं सर्टेन चीजें लिखूंगा जी, ये है। तो ऑल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस हैव अ रोबोट दैट इज डूइंग। वो देखें पिवट पॉइंट कहाँ से गया है, पीपी नजर आ रहा है 42, कहाँ से बाउंस हुआ है, पीपी से बाउंस हुआ है ना। तो वो पीपी 60 मिनट का ईएस का नजर आ रहा है। तो जब हम 42 कह रहे हैं तो उसने अगर गिर सकता है तो 48 तक गिर सकता है मिड बैंड तक, या 42 तक गिर सकता है। तो जिन्होंने ये रोबोट्स लिखे हैं वो भी तो ह्यूमंस है ना, और वो ह्यूमन क्या यूज कर रहे हैं, मैथ यूज कर रहे हैं। कोई एलियंस तो आके रोबोट नहीं लिख गए। सो जितने भी बॉट्स लगे हुए हैं वो मैथ से चलते हैं और उनको पता है कि कहाँ स्टॉप लॉसेस हैं। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर फंसता है जी, और कोई नहीं फंसता, क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते रहते हैं, या गैम्बलर स्टाइल जो बंदा है वो फंस जाता है। तो आप जिसने 180 से लिया हुआ है वो 118 तक लेके आ रहा है यार, जो ट्रेल कर रहा है। हमें तो अपनी फीस पर ट्रेड उठानी चाहिए जितनी कि हम आपको लाइक पैसे बनवा देते हैं, लेकिन ऐसे कोई मसला नहीं है। आई डोंट केयर मैन, आपकी किस्मत का है, आप 1000 बनाओ या 10,000 बनाओ या करोड़ बनाओ, आई डोंट केयर। ऑल आई केयर अबाउट इज जस्ट बनाओ, कुछ ना कुछ बनाओ यार। Yes. ओह मैन, कितनी तेजी से गिरा है जी, 40 पिवट पे आके टेस्ट हो रहा है। वही मार्केट है ना, 180 से घूम के पिवट पे आ गई है। तो Almost 200 points. Yes. सर देखें ये 180 से 80, यस। तो Yes ने भी अपना हक अदा कर दिया हक अदा किया यार, पूरा हक अदा किया है। मैं कहता हूँ आज मजा आया जी, प्रॉपर ट्रेड लेने का मजा आया। एक दो माइक्रो से ही आपका अकाउंट टारगेट पूरा हो जाता है। So NASDAQ is testing. Let me see what is it testing at the moment. अभी कौन सा वेट करें, अभी 76 क्रिटिकल है। अब ऊपर से आ रही है तो 76 क्रिटिकल है ना, तो 76 तक, क्योंकि अब पहले जाते हुए पिवट टेस्ट हो रहा था, वापस आते हुए पिवट टेस्ट हो रहा है। रिट्रेसमेंट देखें कितने मजे की दी है यार, मैं कहता हूँ सुकून आ गया आज। 2 माइक्रो से $150 पर अकाउंट यार। सो घबराना नहीं है आपने, और याद रखें जिसने लास्ट टाइम कहा था घबराना नहीं है वो जेल में है। Yes ने 3 मिड बैंड दे दी। 3 मिड बैंड दिए हैं एक्चुअली, मेरा ख्याल है ये से Actually, नीचे more आते than हुए that. 4 मिड बैंड दिए हैं। एक सेकंड। तो आप लोगों को जो मैथ दिया जा रहा है वो किसी रीजन से वजह से 1 2 3 4 5 6 सर, ऑलमोस्ट 6। Yeah. 6 मिड बैंड है। एक माइक, तो जब डैनियल भी कहते हैं कि वर्क विद एरिया टू एरिया, अगर आपके पास एंड ऑफ डे अकाउंट है, पर्डिया है, इस तरह के अकाउंट, तो ये ट्रेल करने वाले होते हैं। ये देखें 200 पॉइंट की मूव आई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं माजिद भाई, 180 का नंबर दिया था, वो 179 75 से गई। इतना तो मेरा बनता है, लेकिन अब इतना तो आप मुझे एक टिक का तो दें, बल्कि 5 पॉइंट का मेरा बफर होता है। 5 पॉइंट की एक्यूरेसी के अंदर अंदर हम आपको कुछ ना कुछ निकाल देंगे। कंग्रेचुलेशंस जी, आपने रिकवर कर ली अपने 200 माइक्रो में, लेकिन थोड़ा सा प्यार से जरा। अब जा रही है ये रिट्रेस लेने वन मोर टाइम। अभी तक उसने सिर्फ 62% रिकवर किया है। अभी नैस्डैक का अभी हायर लो लगना है, सॉरी लोअर हाई। अभी ईएस का, ईएस अभी ने उसने स्विंग वापस दी है। 42 पॉइंट ऊपर गई थी, 27 पॉइंट नीचे आई है। तो ईएस का भी टाइम है था जी, अब वापस जा रही है। पिवट के करीब करीब से आ गई। नेवर रियली आवर पिवट वाज एट, कहाँ से गई है जी, करंट डे का ओपन से शुरू हुई है।
करंट डे का मिड, एक सेकंड आपको कुछ बताते हैं। करंट डे का ओपन, इंटरेस्टिंग। हैप्पी भाई आप आए हैं, मार्केट लुटा गई है भाई। It's okay. He can still do it from out of thin air. He can still recover. अब रेड बॉक्सेस हैं, वेट करें। ईएस को 60 तक रिट्रेस ले लेने दें, वेट करें। अभी कुछ नहीं करना हमने, अभी वेट करें। ये लोग कहते हैं ना चार्ट दिखाओ, यार मसला ये है कि मैं चार्ट तो दिखा दूंगा। $1,80,000 इस टिकटॉक के अकाउंट पे लगा है गिफ्टिंग कर करके। लेवल 42 हमने दिया है कंपनी पे। जितने फॉलोअर्स हैं ना जो आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, उनका जाके लेवल चेक किया करें टिकटॉक पे। इसका मतलब है अगर वो बहुत अच्छे कमा रहे हैं तो गिफ्ट भी दें ना। कौन देता है 1,90,000 गिफ्ट, राइट? तो बात दरअसल ये है कि मैं अगर यहाँ चार्ट दिखाना शुरू करूँ तो वायलेशन आ जाएगी, वायलेशन आ जाएगी। मेरा 42 लेवल, 41 लेवल है, 42 कुछ इसी तरह है। और ये आपको लेवल मिलते हैं गिफ्ट देने से, गिफ्ट लेने से नहीं मिलते हैं। तो मैं अपना इतना बड़ा अकाउंट जो है उसको रिस्क कर दूं आप लोगों को चार्ट्स दिखाने के लिए। आ जाओ इन पर्सन, आ जाओ मेरे को चार्ट्स देखना। माजिद भाई के पीछे इतना बड़ा चार्ट लगा है, दिखा दे। लेट इट गो टू द रेड बॉक्स। अब लोअर हाई लगा है 30-20 में, so it's making it this way. $25,000 जा रही है जी रेड बॉक्स तक। Now pulled back and is trying to test one more time. Let's see. 150, हमारे पास आज का मॉर्निंग का हाई है 179.75। काम 150 तक तो आ गए। Where is gold going? गोल्ड की तरफ आते हैं जी, एक सेकंड। गोल्ड हमारा R1 तक नहीं गया अभी, pivots. So 4,200 is still waiting for the price to cross 30-minute upper band. Oh, it's now heading towards back to test 180. Let's see. Let's see if it tests 180. तो इतनी बड़ी मूव आई सर, 180 से 80 और फिर वापस। Incredible. नेक्स्ट जी R2 से स्लाइटली अबव, अगर ये ऊपर गई ना R2 पे तो we'll wait for 305 or 300 at least, little bit upper range, because that is your previous highest point of yesterday. So highest point of yesterday, so 305 should be good. नो जी 3 मिनट में हाफ एन आवर वाली कैंडल भी पूरी खुल जानी है। Everyone is done for the day. Yeah, they're done. I'm just people are asking what's next, so I say next is 305. They should be disciplined at the same time because ये होता है ना कि point of लेकिन giving everything ठीक है, back? नंबर दे देते हैं। नंबर अब आए शाम के 5 बजे आए, जो मर्जी नंबर आए जी, दोबारा What do स्विंग you suggest for FTMO?
FTMO For सर मैं NASDAQ. 600 500 24,500 24,500 and then upper अपर होगा 25,500 25,500. 1000 के बाद Wait, जाके it's still the same, right? Okay. Where did I get the 305 240 का चार्ट देखें R2 के ऊपर एक ग्रीन लाइन जा रही है जी तो hopefully that makes sense हाँ जी congratulations R1 से जिसने पैसे नहीं बनवाए ना बनाए नहीं चार 5 मिड बैंड ऊपर जाते हुए और 4 नीचे आते हुए R1 लेके ना मिड बैंड तक बैठे congratulations जी और उसको इनका पता नहीं क्या कंफ्यूजन है डील कर उसकी इसने काउंट खो गया लाइव चार्ट में चार्ट नहीं लाइव में चार्ट शो नहीं समझ आ रही उसको क्या करें हाँ मैं नहीं शो कर रहा जी मैं लाइव में शो नहीं करता जी कभी भी शो नहीं करता मैं कोई चार्ट नहीं करता तब ठीक क्या है तेरी करें या नहीं मैं करता नहीं सर लीगली काफी थोड़ा सा टिकटॉक को मसला है कि पता नहीं हम क्या यहाँ चूरन बेच रहे हैं सो इसलिए क्योंकि टिकटॉक बनी हुई है डांसिंग वीडियोस के लिए कैट वीडियोस के लिए लोगों ने यहाँ ट्रेडिंग की दुकानें खोल के बैठे हुए वेयर टू सी 240 के चार्ट पे बना हुआ है जी एक 240 के ऊपर R2 के ऊपर एक लाइन जा रही है आपकी नहीं जा रही मेरी तो जा रही है मैं देखता हूँ जी 3 और 4 ये देखें जी यस्टरडेज हाई मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ इसका एक सेकंड जी 2 3 और 5 में एक नंबर जा रहा है एक सेकंड जी आपको अभी बताता सॉरी माउस इज सो बिग ये है जी वो देखें 3 और 5 के ऊपर प्रीवियस वीक आई जस्ट हैव इट एट अ फ्यू अदर इंडिकेटर्स ऑलराइट गाइस 10:30 शुड वी गो I'm just saying आ गई जी आ गई प्राइस नीचे आ गई another mid band is giving little bit away 10:30 SRES बन गया 30-20 में कोई बात नहीं जी इट्स ओके कल मुझे वाड़ दिया टेक प्रॉफिट वालों ने एज मेरे सिर्फ कॉपियर पे मेस्ड अप हो गया तो वो कौन गया दफना के आया हूँ सुबह चार क्योंकि वो ऑफसेट थे ना 25,000 वाले 2 लॉन्ग किए रिवर्स दबाया इतनी बड़ी गाल देने का दिल कर रहा है लेकिन लाइव बैठा और वो नहीं क्या उनका सिस्टम ऑटो मैंने अभी टिकट खोल ली है क्योंकि फहद को तो दे दिया पर्डिया ने दे दिया फहद को वापस मुझे वो फहद उसने गालियां भी तो बड़ी लंबी लंबी लिखी थी लेकिन टेक प्रॉफिट नहीं देता जे के भी हुए हैं ऐसा नहीं है कि जतन के हुए हैं सिर्फ नेक्स्ट टाइम डोंट हिट रिवर्स नहीं कॉपियर मैं तो उनका यूज कर रहा हूँ वो जो है आपका टेक ट्रेडोवेट का उनका बिल्ट इन सिर्फ रिवर्स में वो गया है ना एक वो 2 हो चुके 2 नहीं हुए और उनका सिस्टम ने अलर्ट और मैंने वो पूरे उनकी लॉग पढ़ा है 34 सेकंड में ट्रेड में रहा हूँ और 1 माइक्रो से ये नहीं हुआ कि मैंने कोई हजारों डॉलर कमा लिए हैं लो जी नीचे आ रहे हैं प्राइस आ रही है जी प्राइस आ रही है थले आ रही है कोई माइक्रो से नीचे आ रहा है SRES बिल्ड हो रहा है आ जा अब नीचे आ जा जी जितना नीचे आना है नीचे आ जा अब जरा मार्केट में बहुत चाल आया इट्स ओके व्हाटएवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर जस्ट रिमेंबर इन लाइफ जो आपको मारेगा नहीं जो मार दिया फिर तो खत्म हो गई ना बात लेकिन जो मारेगा नहीं वो आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा So it is my fault. I did click reverse. Yes, I can't. I have to own up to my mistake. It's okay.
But at least you should know, as a human, we all make mistakes, and it was a not an intentional trading mistake, just a stupid clicking the wrong technical. लो जी मैं हर बुलॉक्स में डन हो गया हूँ जी. Take profit. Again, good thing yeah, I don't have to do my EAs. Quite a few EAs were ready. So So yes, I am doing a seminar. This Saturday. है खत्म हो गया तो काम जल्दी हो है नहीं देखें आज स्ट्रीम बंद हो गई डन हो गया नहीं मैं तो लाइव हूँ मैं तो 12 बजे तो मैंने कहा अगर कोई और मार्केट के अंदर जाल बिछा दें लेकिन जाल दूर दूर है एक 305 है एक 650 है तो अभी इधर दूर है जा रहे हैं जी नो प्रॉब्लम दोबारा जाके R1 टेस्ट हो रही है यार ये R1 टेस्ट होगी पहले 180 ब्रेक करना है इसमें अभी मुश्किल लग रहा है 305 R2 से स्लाइड यस्टरडे का हाई जो है ना वो हमने टेस्ट करना है अगर एरिया लिखा हुआ है 200 305 I was sitting from 9 नीचे 9 क्या किस नंबर में बैठी थी हाँ जी 9:30 से लॉन्ग किधर से कर लिया था मैं S1 से बैठी थी S1 से लॉन्ग किया था तो R1 तक बैठे ना फिर S1 से पिवट तक ठीक है मैंने आपको फोटो भेजी हाँ मैंने देखे 980 से मैं लॉन्ग कर रही हूँ Let's see if it breaks 56 now. We're back in the zone of almost R1 again. 200 पॉइंट की स्विंग आई है जी 180 से 80 और फिर वापस 180 crazy. Let me open up. So I'll show you guys shortly the office as well. Again, I do a bit of a tour every day to show you what I'm doing. Where do we sit? So we do have a Saturday seminar. 50. All right, let's see if it tries to break 180 again this time around. 175. 180, it broke 184, but still. Divergence on 30-20, heavy divergence on 30-20. So yes, divergence 56 over 56. Let's see. NASDAQ has broken your yesterday's high. So it's testing the upper range. What's the upper range? Somewhere around 190. But let's see what happens to one more time. So it went from 180 down to 80 and then went back up to 180. Interesting. 30-20 ES is in divergence. You have 56. So how do I read this? How do I see there's a divergence?
57 is higher than 56. Look at the strength. If 56 strength is 90, but 57 strength is 64. So more chances, but it depends on NASDAQ now. If NASDAQ likes to break, so let's see 83. What's the high for today? 187 high, 188 is the high, and we are at the upper range of NASDAQ. One more time. Let's see. Does it give us a few points from there, from 190? So our number hit 188. Yeah. Some users do take it again, just saying, because what happens, it's coming from PP all the way to like 180 to 180 minus, give me dollar difference, 1 second, 149 divided by 21. So dollar difference is 7. There you go. NASDAQ has broken R1, yesterday's high. So it went from 805 to 25,000. ES is still somewhat in a divergence because it hasn't. Wants to break 190, but struggling. 200 points when the pressure is down. It's not. So it went to 190.50. Gold, I need $40 more before I do anything. I need to get to gold to 4,200. 10 points from 90, by the way, give or take 5 points. Upper range of NQ. The NASDAQ and ES are synced. It breathes up, ES goes up. Where is the rest of the guys? Give me a second. The NASDAQ, everything else is at R1. This one is at pivot. Dow is below pivot. ES has gone above pivot. Russell has gone above pivot. So right now, Russell is testing R1. ES ES is testing R1 again. NASDAQ is trying to break your R1. एक सौ नब्बे तोड़ देगा almost 190.25. किसी ने R1 की upper range से भी ले लिए 10 पॉइंट. That's good जी. So the price has gone back up to R1, almost to ES. So if you look at ES, 30-minute is in a bit of a divergence. So it will go and test maybe 59 again. 61 again, the value area, and come down. It's weird. They just disappear. They're not just. It never happened.
So another 15-minute candle will close at 3 minutes. Let's see. That came down fast. Yes, you're right. Yes, if this candle makes a black candle on ES, another mid band is being tested on ES. Let's see. So that mid band has given you a point as well. But I'm not taking this. Full mid band worked on ES. Large triggers open. Price came to mid band. Now it's going back up. Here, Apex is a little difficult to do. Bull knocks is okay, or take profit. Apex, the rules are slightly difficult with the 30% drawdown within the trade. Sometimes guys like me, we do average. So let's say if you have $50,000 account, Apex was great. This was the only company we promoted for the last 3 years, and then other companies came with less relaxed rules. So Apex is good if you're very much disciplined. All right, some volatility came in the market, somebody pump and dump something, and it is insane, man. It can happen. Look at the divergence. You see why the divergence line came. 60 is higher than 56, and then you have so another mid band on 3020. Price should go down, in my opinion, from here. See, 190 is not breaking. Maybe make another divergence on 3020 failed on ES. Does it want to break 190? Yes, Wise, you can take the money from. Yeah, yes, you can take the money from. ES's 3020 is another divergence. So see, it wants to break 190. Did it break 192? I'll ask you a question. Anji? I noticed something. Yes. Look, ये क्या चीज है जी? it didn't get floated, or am I wrong हाँ somewhere? जी यानी क्या चीज? See, this should have been a diversion, right?
It should have been a diversion. Should have been, yes. But वो बता सकेंगे कि why? Because Why? आगे divergence plot हुई है. Why it didn't get plotted? हम्म. Or was it a diversion or not? क्योंकि देखिए डाइवर्जेंस में सबसे बड़ी चीज होती है टाइम. अगर लेट आ रहा है ना तो फिर नहीं वो वैलिड होती. अब ये टाइम कितनी देर बाद हुआ है ये भी तो देखना है ना. नहीं नेक्स्ट 931, 935. रखे फिर प्लॉट होनी चाहिए क्योंकि बाकी हो रही हैं वो मुझे लाइनें नजर आ रही हैं बाकी. ये क्यों नहीं आई? दैट्स ऑलराइट. वन स्टिल 190 इज हार्ड टू ब्रेक. स्ट्रगलिंग एट 190. Yeah? That's very. हैं? Yeah, Wait couple of days. very. If it happens again. Yeah. Yes, it's still in another divergence because you have NASDAQ pulling it up. $195 now. So R1 is done, guys. Don't risk it, please. It's officially done twice. Now we wait. It has broken because remember, only 10 minutes to go to 11 o'clock. Maybe a reversal time, but we're back in testing R1. So the market is up 154 points. Gold is nothing there, 42. It's 199, 25,200. Effects पे sale है ना? Sale है, बिल्कुल है जी. How much is it for? 80% off. Apex. The price? Yes. Price is, I think, $40, $35. Yes. लेकिन अगर एपेक्स और बुल नॉक्स लेना है तो बुल नॉक्स लेना तो उसका बेटर है. $199. अब देखें डाइवर्जेंस बनती है कि नहीं दोबारा. Sell stop. So I may run the stream only until 11 and give you the numbers for the next session. I mean, because really it's far. What's the max daily points profit we can take for which company, dear? Which company? You can, depending on company, you can take whatever you like.
profit is no limit on PA. PA, there's no limit for evaluation. You have it's 50% consistency rule. So अगर 1500 का अकाउंट है तो 750 बनाना है मैक्सिमम. एक सौ 90 से आई है 165 पे. Crazy. Another mid band has not failed yet. If you milk, yeah, you should lose because आपका टारगेट बढ़ जाएगा. वरना अगर आपने ज्यादा पैसे बना लिए टारगेट बढ़ जाएगा. So not my recommendation to. So if you're doing evaluation on take profit, your maximum is 50% of the target. या भाई यहाँ से 100 एकदम गिर जाओ और चला जा पिवट के ऊपर. सर 150 पॉइंट गिर जाओ यहाँ से. So I may not stick around till full 12 o'clock today. 150. एक और डाइवर्जन लग जा. लाइन आ जा 30-20 पे ब्लैक कैंडल के बाद 4 ticks below. There you go, double divergence. Let's see if divergent pays. जब divergence आ जाए दो चीजें होगा. Apex and Take Profit, two different companies, completely different rules. Take Profit pays you daily. Use the code SuperAreas. You'll get it for $90. And if my favorite is Take Profit right now, and we just like it. बस जी बहुत प्रॉफिट हो गया. 4 मिनट और लाइए थे. आज 11 बजे तक ये सेशन. So the numbers to watch out, guys, for NASDAQ, still wait for 24,650. Number one, you should still wait for ES to R2. So NASDAQ is 24,650. You know, at this time, because if it S2 could still give you a little bit, but because the boxes are already filled yesterday, let's take expected low and lower number 650 and upper 25,305 is the plan. So you guys decide what to do. So gold, you still need to pass the account. You just have less restrictions there, right? So compared to Apex, much less daily payouts, quite a bit. 50,000 EA account on what's the profit goal? $3,000. You need to
ending balance must be $3,000. 153. So it's testing again, back and forth. R1 को थोड़ा सा. Yeah, you can still do take profit. You can do any account. It's not a problem. Pushing back up. Even after divergence, another mid-band is. And now the large triggers are starting to twist, so on ES. So 2 more minutes and now. See, it's NASDAQ that's pulling ES up. If you want to sit behind, it's 11 grand. My God. 2 seats, 23. Premium Club 4. My God. $23,000. NASDAQ back in R1 again, one more time. Yes, double divergence failing, 30-20, and went back up. NASDAQ is up to 190 again. NASDAQ नहीं वापस आना चाहती. Maybe something else is. Let me double check what's going on. Tesla 14,424. What is up? Amazon is up, Nvidia up, Microsoft up, Apple up. See, this is 30-20 consolidating. Up, down, up, down. So it went from 190 down to 160, went back up. Price is consolidating within that range. Look at the black candle on 30-20. 1, 2, 3, 4. 4 black candles up and down. जी सर क्या हाल चाल है बस फर्स्ट क्लास. आज मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ हूँ. मेन फ्लोर को विक्रम भाई लीड कर रहे हैं. कैसे चल रहा है? दुआएं सर यही. यार काम तो आता रहता है जाता रहता है. It's okay. क्योंकि आप एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे हैं लग रहा है. किसी के साथ बैठ के करें, खुद से ना करें. फिर ये है जो हमारे साथ बैठ के 9 मेंटर्स के कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं. हाँ हाँ आ जाया करें सुबह अंदर विक्रम भाई के साथ बैठ के कर लें. अब ये देखिए मैंने एफएक्स में लिया था जो डील में हाँ हाँ 80% के 80% और रीसेट था $50. हाँ जी हाँ जी. तो विद इन ए वीक वो 15,000 वाला लिया था. हाँ हाँ 8,500 बनाए. हाँ हाँ और उसके बाद वो चला गया. ठीक है. कोई फिर रीसेट किया हाँ विद इन 1 वीक. हाँ फिर से बनाया. फिर ये जो लास्ट इस मंडे हाँ फिर वापस कर दिए. फिर वापस. तो बना रहे हैं दे रहे हैं, बना रहे हैं दे रहे हैं. किसी के साथ बैठ के ट्रेडिंग करें, खुद से ना करें. बताए मैंने आपको नंबर दिए हुए हैं यहाँ बैठ के. आज के इस सुबह के ये हमारे डेली नोट्स हैं. मेरी तरह ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है. मैंने आज सुबह आके कहा था कि नैस्डैक के नंबर क्या होंगे, ईएस के आज सिर्फ हमने ट्रेड करना है 25,180 लिखा है ना, यहाँ से आए तो सेल करेंगे. ठीक है. और अगर 24,850 आ गया तो वहां से हम बाय करेंगे. सारों ने उसी पे किया और सारे डन हो गए. तो और क्या है, एक ट्रेड डाला है पूरे दिन में.
और ईएस में ये ESC को- ईएस है ना, हम्म, इन्होंने कहा था कि R1 से सेल करें, माजिद भाई का। हम्म, सारों ने R1 से सेल किया, किसी ने 100, मेरे अपने अकाउंट्स में $200 पर अकाउंट बना हुआ है। तो फिर इसका मतलब अभी आप खुद से अभी संभल नहीं पाए, किसी को फॉलो कर लें। सर आपने कितनी बजे हम 9 बजे स्टार्ट होते हैं, आज तो सारे बंदे 10 बजे डन हो गए थे। सुबह 9 बजे 9 बजे आ जाए हाँ, आ जाया करें आके। वैसे तो सर ने कई बार हाँ हाँ, आप आए, बैठे विक्रम भाई के साथ बैठ के ट्रेड करें, अपना ट्रेड ना करें। ये अपने ट्रेड में आप कितना का एनालिसिस कर लेंगे? तो जब आपको सारा कुछ निचोड़ के एक नंबर दिया है तो उस नंबर पे बैठ जाएं। वो नंबर ना आए तो नया ट्रेड करें, और अगर आ गया तो कर लें। इतनी सी बात है, इतना कोई मुश्किल तो है नहीं। ये तो नई नोटबुक ली है, ये 20 तारीख का है। नैस्डैक हिट हुई, 21 तारीख को हमने गोल्ड लिया, 22 यस्टरडे हमने तो 3 मार्केट्स उठाते हैं। गोल्ड तो नहीं नहीं, बेशक है, लेकिन नंबर है ना, आज भी नंबर दिया हुआ है 4200 है। तो एनालिसिस का काम हम पे कर छोड़ दें, और आप, क्योंकि बंदा इतनी ज्यादा मार्केट्स को खुद नहीं कर सकता, वो एकदम उसमें वो हो जाता रिवेंज हो जाता है, इमोशंस आ जाते हैं। तो किसी के साथ बैठ के करें, जब वो ट्रेड करो जिनका इमोशन आपसे ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो that's it. सर मेरा सेकंड को ना ड्यू है जो उसको रीसेट खुद ही हो जाएगा वो, तो हाँ, तो यह अभी $50 का है। तो वो 50 में ही रिन्यू होगा। वो जो रिन्यू जो है ना हाँ सर, हाँ, वो मेरा है $99। नहीं फिर कैंसिल करें ना। और रिन्यूअल जो अभी फिर से हाँ। इन्होंने लाया है 28 तारीख को नहीं, $50 तो फिर आप उसको कैंसिल कर दें, नया अकाउंट ले लेना। मुझे ये, आप एपेक्स के फैन हैं, एपेक्स क्यों पसंद है? सर इफेक्ट ऐसा है कि एक तो यूज टू हो गए हैं ज्यादा, उसमें रूल्स का पता लग गया है। ठीक है। सेकेंडली क्या है कि उसका जो फी होता है ना, ये थोड़ा इनिशियली कम होता है। आई मीन कमीशन जो इनिशियल जो हमने पे करना है। हाँ। नहीं देखें, और कंपनीज हैं, टेक प्रॉफिट है, बुल नॉक्स है, एपेक्स में सिर्फ एक रूल नहीं मुझे पसंद। आपने एक ट्रेड डाला 10 से R1 पे, ठीक है, और आपके पास $1500 है, ठीक है, राउंड 2 की बात हो रही है, राउंड 1 की बात नहीं हो रही। मैंने आप पीए में है, जब आप पीए में आ गए, आप कई दफा होता है आपने 2-3 माइक्रो से लिया, पहले तो बात है हमारी पूरी टीम यहाँ बैठ के आपको कहेगी कि पीए के अकाउंट्स आपने मिनी में नहीं करने। 2-4 स्टॉप लॉस हो गए तो खत्म हो जाएगा ना काम। 2 मिड बैंड ही खराब हो गए, 150-150 चला गया, तो माइक्रो करना है ना। तो हमने माइक्रो में $50 से $100 रोज के कमाने हैं, और 15 दिन में आपका हो जाएगा। मेरा एक है जो पीए अकाउंट है ना, वो क्लियर हुआ पड़ा है 2500 वाला। हाँ हाँ, तो उसको स्लो जाए ना। अभी मैंने वो किया ही नहीं, उसका फी नहीं दिया। तो फी पे करते हैं ना, ताकि आप उसका पीए की तो फीस में आ जाए ना, पीए में आ जाए। सो नंबर 1 ये है कि आप उसको पीए में करना। एपेक्स में ये रूल जो सबसे गंदा मुझे लगता है, वो कहते हैं, उसको कहते हैं मैक्सिमम ट्रेड के अंदर एक लॉस होता है। आपने ट्रेड लिया, यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है बाकी कंपनीज के साथ, ये रूल नहीं है कि आपने ट्रेड लिया 6600 पे, आप गए S&P पे, आप लॉन्ग गए और ये चला गया 6800, सॉरी ये बहुत ज्यादा ले गया 6605 पे, ठीक है, ये आपके $150 का प्रॉफिट आ गया। 5 पॉइंट यानी 250। हाँ 5, हाँ 25, नहीं 5, हाँ 2.5। नॉर्मल रूल यह है कि आप यहाँ से लूज करेंगे तो आपका ड्रॉ डाउन नीचे होगा, ठीक है। लेकिन एक रूल, एक और मसला ये है, ये तो एक नॉर्मल ट्रेड है, आपने ट्रेड लिया 6600 पे, आप लॉन्ग गए और वो गिरनी शुरू हो गई, आपके पास था $1500, इसका 30% होता है 450। हाँ, वो ये कहते हैं कि -450 पे आपको ट्रेड बंद करना है। हाँ, करना है ना, ये बाकी कंपनीज में नहीं है। कई दफा क्या होता है, अगर मेरे खिलाफ चली गई है कि 66, 65, 95 पे आ गई और कुछ और नीचे गिर रही है, तो मैं एवरेज करता हूँ कि अपना ट्रेड को एक और MNQ एक और करके निकल, तो वो कई दफा -600 से भी बाउंस कर जाती है ऊपर, वो पे नहीं करते।
उसका एक रूल, हाँ उसको तोड़ने का एक रूल। हाँ जी, हाँ जी जी जी, क्यों क्या हो गया? 70 पॉइंट बनते हैं। हाँ हाँ बन गए थे। मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, हैं 70 पॉइंट डिक्लेयर नहीं करूंगा। डिक्लेयर ना करें, देखें 70 पॉइंट ठीक है सब ईएस में, ठीक है तो आप डिक्लेयर ग्रुप में करें ना। अगर आपके 70 बने हैं तो बने हैं, इसमें क्या है? और बाकियों को करेज मिलती है ना कि बाकी एक एक क्यों कर रहे हैं, तो क्या चीज आता देखें फिर। एक ही लॉट लगाया। नहीं नहीं सारे ग्रुप के बने हैं या खाली आप? ग्रुप के किसी के 40 किसी ने 40 पॉइंट्स लिए, 40 पॉइंट लेना मजाक थोड़ी है। हाँ हाँ लेकिन फिर आप लिखे ना कि आज फिर माइक्रो में सबसे पहले सारे माइक्रो ही हैं, इट्स ओके। यहाँ 200 पॉइंट किसी ने लिया है क्योंकि 180 से सेल करके नीचे आ गया था। तो अच्छा आप कह रहे थे कि तो डोंट वरी, इट्स लेट देम। उसका एक एक फ्लोर। हाँ जी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि आई ऑलरेडी मैं सेफ्टी नेट में आ चुका, ठीक है। ठीक है, और जैसे ही सेफ्टी नेट में आया हूँ हाँ, हम्म, तो मैं एलिजिबल हूँ उसका विड्रॉल का। ठीक है। जिस दिन ये रूल टूटा ना, हाँ उसी दिन मैंने वो डाल दिया, रिक्वेस्ट पे आउट, रिक्वेस्ट पे आउट। ठीक है ठीक है, तो वो कहते हैं 8 दिन और पे वो ठीक। कर, हाँ हाँ $50 वाले, हाँ वो करने के बाद हाँ फिर आप वो कर सकते हैं। मुझे मालूम है वो राउंड फिर 16 दिन पे ले जाते हैं ना। लेकिन अगर आप, हाँ बस ये है, अगर आपने लेकिन उससे अच्छा पे टेक प्रॉफिट नहीं है मैं $90 दूं, $1 टू डॉलर कॉस्ट है ना, $90 मैं दूं, उसमें राउंड 2 इंक्लूड होता है। वो पीए की फी चार्ज ही नहीं करते। टोटल यानी टोटल $90 है तो 50, हाँ या $100 50,000 वाला ले लें तो मेरे पास दिया उन्होंने और $90 पे किया मैंने, कोड लगाया, डिस्काउंट लिया और मुझे मिले 90 का। ठीक है। वो ये कहते हैं अगर आप 30 डेज के अंदर पास हो गए तो आपको राउंड 2 की फीस नहीं देनी 30 डेज 30 डेज के अंदर। तो ये और फिर मुझे डेली पे आउट मिलता रहता है, मैंने क्यों 8 दिन वेट करना है। ठीक है। तो और 80% पे आउट या 90%? 80%। इसमें 100% यार लेकिन यार 16 दिन वेट कर रहे हैं, इतने रूल हैं तो मैं क्यों ना। कल हुआ मेरे से गलती हो गई, मेरे अकाउंट 4 थे, हेज लग गया, वो मेरे उन्होंने प्रो कल बंद कर दिए टेक प्रॉफिट ने। उसके रूल डिफरेंट है लेकिन इजियर है। ये 450 वाली जलालत तो नहीं है ना, जलालत ही है ना यार। आप मैं अगर कई दफा आता है माइक्रो भी करता हूँ तो -600 देख लेता हूँ यार, कोई इतनी बात नहीं है। एवरेज किया तो वो ये कहते हैं 450 में बंद करो, तो नहीं बंद करना यार। मैंने मेरा अकाउंट है, मैं उसको -1600 पे बंद, हाँ जितना मेरा थ्रेश होल्ड है। यस यस। लेकिन मैं तो फॉलो नहीं करता हूँ। नहीं नहीं वो ठीक है लेकिन इवेंचुअली वो आपको पे आउट डिनाई करेंगे ना फिर, तो व्हाई टेक दैट रिस्क। तो टेक प्रॉफिट में ये नहीं है कि टेक प्रॉफिट में ये नहीं है। आपका अकाउंट 1500 का है ना, अब 1499 से भी वापस चले गए ना तो वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, हमें कोई और मैक्सिमम कितना उसमें वो, जितना मर्जी बनाए शाम को ले लें। अच्छा इसका जैसे है कि केवल 30% दोनों तरफ से? नहीं नहीं नहीं, 30% उधर वो कहते हैं पीए सुबह मिला है ना, शाम को जो भी टारगेट पूरा कर लें घर ले जाएं पैसे। और 30 डेज में ना क्लियर होता तो फिर आपको एक और $90 पे करने तो पड़ेंगे तब ना, एक तब और फिर एक और 90, तो आपके फिर भी डॉलर टू डॉलर टेक प्रॉफिट सस्ता पड़ता है। एंड ऑफ द डे पर्डिया ले लें फिर वो महंगे अकाउंट्स हैं। एंड ऑफ द डे लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड सारों की है। पर ट्रेडिंग जो ये होता है ना, हाँ उसमें घुसते रहो। आई नो ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको वो End of the day में ये होता है कि फिर वो महंगा अकाउंट है $650 का, वो लाइव अकाउंट है।
Since 11 o'clock, it's not giving an output. There you go. We're back in the game. Give me a second, guys. It should. There you go. We got some sort of audio and video. Yeah, if the time stops, that's your cue that my. Yes, yeah, no. Take profit is trade weight, and you have your. What do you call it? Back into the zone of how much money I would like to get. So $90 times 4 times 4, 360 plus 105. Would like to get $465 today. So let's gamble a little. My favorite gambling position is take profit the moment it crosses the threshold. All right, let's make $455 and request tonight. Come on, gold. So let's do this. 5, so 163, 4. Come on. Let's do a risk on it. Price went back up. See consolidation around there. $33. Go on SuperAreas.com and you will see us there listed there. Let me just fix a couple of these. All right, 11:30 candle. So today got to 25,199. 25,199, and the low in the morning was 25. Excuse me. 25,933. 24,933. 266. Okay. R1 is not broken.
So 175 again. See, R1 is struggling. No, I'm not taking any short at 200. G 305.
Went to 209. What let R2G? My R2 for today. That's it. 305. And did not break so much. Thank you so much. You will start it. Come on, guys. Pay using the same value as SuperAreas.
Email. Mentor. Email. Just looking at a couple of things. Sorry, guys, just sorry, Ashraf. I need to fix this, Ashraf. Where's any desk? Sorry, guys, I have nothing to say because market is not doing anything. So 1067. So open challenge to everybody. You want to teach, open an office, show up to work every day, have 10 mentors, do market analysis for 15 markets. So you gotta remove take profit. All right, guys, again, 11:43. I'll stick around another 10 minutes
No problem. गिर गई जी, मार्केट गिर गई। आ जाओ नीचे, आ जाओ। 360 ते बनाइए। 9 चुका आती अस्थाई। I just love to make. I have a target. Target is to make 4 times $90. 90 times 4, $360. By 330, so I can recover my 132. One micro is good enough. Come on, give me $10 more. There you go. Oh, there's a reason why I did what I did. Now, let me explain you the reason. So I was short from 175 micros. So let me post my results and then I'll explain what I did. कल मेरा टेक प्रॉफिट गया ना 4, तो कितने का था? 90 times 4. मैं $360 चुभ रहे थे। इतना चुभते हैं क्योंकि वो हर अकाउंट ये क्लियर करो, तो मैंने कहा आज इनसे मैंने पे आउट लेना है। तो 5वां अकाउंट कॉपियर पे नहीं था क्योंकि वो 50,000 वाला था, तो वो 5वां अकाउंट कॉपियर पे नहीं था, तो 360। अभी 20% उनको देना है मैंने, तो 360 का 20% $72 और बना लूं ना मैं, तो मैंने 3 अकाउंट तो गिर, मैं शॉर्ट में था ना, तो डन हो गया जी। मैं शॉर्ट में था 170 से 130 पे। ये मैंने ये देखा जी, 2360 हो गए। तो अब मुझे मिल जाएंगे इसमें से 360 में से 80% मुझे मिल जाएगा शाम को। $72 उनको देके, तो अब एक अकाउंट रह जाएगा। और ये 50,000 को मैंने निकालने हैं। ये आया था अकाउंट $102 का, 102 प्लस 80, $184 हो गए ना, तो मेरा ब्रेक, मेरे सारी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, राइट। सो मैंने 200 आपको 200 पे मैं ऑर्डर खुद लगाया ये आपने लगाया है? आया वहाँ मेरा पिक नहीं हुआ। आपका ऑर्डर 200 पे किया, क्योंकि 199 आज का हाई था ना। 200 पे नहीं, मैं 305 का वेट कर रहा था फिर, लेकिन मैंने 5 माइक्रो, क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड हो गया था खत्म, मीनिंग के लाइव थ्रेशोल्ड खत्म हो गया ना। नहीं, थ्रेशोल्ड का लाइव खत्म हो गया, एंड ऑफ डे में चला गया, राइट। सो आई सेड कि नाउ मुझे 10 भी मिले तो मेरे यहाँ, राइट। सो एनीवे गाइस, दिस इज व्हाट शाहिद इलाही साहब 199 के लिए वापस। हाँ 199। अब मैं दोबारा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वापस ऊपर जाए ना, तो उसको जाने ही दो ना, ताकि ये मैंने $72 लेने हैं, बट एक्चुअली अगर मैं इनसे ले लूँ, मैंने बनाने हैं 1 और 2। नहीं, गोल्ड 4200 पे जाए तो सही, अभी तो खड़ा है उधर ही। आज गोल्ड मेरे ख्याल से ज्यादा गोल्ड नहीं मूव हुआ, गोल्ड आई नहीं मूवमेंट, अभी $50 नीचे है। 142 प्लस 90 प्लस 20% मोर ऑन दैट, $230 और बनाऊंगा तो मैं एक प्रॉफिट में 100% जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी आ जाएगी, $230. So in order to make 230 divided by 5 micros, so शायद मैं कल बनाऊं, क्योंकि ये तो निकालूं ना मैं रात को 6 बजे के बाद, तो 230 और हो गए। तो हेलो जी, क्या हाल चाल? यस माजिद भाई, अभी अपॉइंटमेंट में वापस आ रहे हैं थोड़ी देर।
लाइव तो जा रहे हैं, अभी लाइव जा रहे हैं 12 बजे तक, पूरे 12। हमारी कमिटमेंट लोगों के साथ 12 बजे तक है ना। ठीक है, 10 o'clock सारा बंद हो गया था। Alright, let me post my results, क्योंकि लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं पोस्ट करते भाई। अभी पोस्ट करते हैं ऐसे, थोड़े पोस्ट करें ना, ट्रोल्स को मजा आता है आराम। ये मैंने 20 देखे मेरे और आप सारों का, हमारा 20,000 का टारगेट है, 9,000 में डन हो गया हूँ पर्डिया से। अभी रश कोई नहीं है, फरवरी तक है, फरवरी तक। कल अकेले करती केले तो ट्रेड करना ही नहीं है, पता क्या है कि नहीं, मैं आपको इसका नुकसान बताता हूँ। केले होता है बंदा ना, जब आप किसी के, हाँ तो फिर नहीं करना था ना। ये तो बार बार हम यही कहेंगे, अकेले तो करना ही नहीं है। ऐसे चलते 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 ना यहाँ से टेबल से ड्रॉप हो गया। नहीं। Because what happens is there's too many variables that is moving. नहीं देखिए, माइक्रो में क्या स्टॉप लेना है। तो फिर हम आपने एक डाला, दो डाले, कहीं ना कहीं जाके आपने फिर 5 फिर 6 फिर 10 नहीं, 10 तो सुसाइड वैसे फिर मैं नहीं ले 10 दफा कमीशन क्यों देना है। सो 10 दफा क्यों करना है। मैं आज इसमें जो किया था, नहीं आपने यस में अच्छा एस्केप कर, क्योंकि देख मैं आपको बताऊं, मैंने और एक डाला, मैं निकल आई। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर का फर्क पता क्या है। प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है कि कहाँ एवरेज करके कहाँ निकल जाना है मैंने, राइट। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ ढूंढ रहा होता है एवरेज कहाँ करूं और कहाँ पर मैं आप इस गंदे ट्रेड से बाहर आऊं, राइट। मीनिंग कि आज जिस तरह मैंने नंबर दिया 180 का, वो सुन रही हैं बैठी हैं, उन्होंने 180 लगाया, प्राइस पता कहाँ से आ गई 179.75 से, एक टिक से। जो हमने ये सुबह 8 o'clock मैंने कहा कल का हाई 180 है, इसने रुकना है। ये देखें सुबह लिखा 25 180 से सेल करना, और वो कितनी पॉइंट मूव हुई। जतन भाई ने लिए ऑलमोस्ट 45 पॉइंट, राइट। किसी ने लिए 100 पॉइंट, विक्रम भाई ने लिए 70 पॉइंट। मिस हो गई तो मिस हो गई, तो क्या करें, वापस जा रही है। अब मैं वेट कर रहा हूँ 305 पे गई शाम तक तो सेल कर दूंगा। तो लेट्स से 180 पे आपने लिया, अब आप सोच रही हैं ये आई नहीं है, वापस नहीं आ रही 180 200 250, तो 2 माइक्रो से एंटर था, आपने 250 पे जाके 2 माइक्रो और पैक करें। 50-60 पॉइंट का उसको रिट्रेस लेने दें। मेजोर 20 पॉइंट 20 पॉइंट मैं $1000 ईएस पे जाके मिनी में एक लॉट और फेंक देता हूँ $1000, क्योंकि 20 पॉइंट की एवरेज, अगर आप ईएस की रेंज देखें ना, ईएस मूव होती है नहीं, लेट्स से $30 की मूव होती है डे, 30 अप एंड 30 डाउन, $60 की स्विंग है। आजकल तो $100 की स्विंग आ रही है। तो अगर ES Y305 इस अगर आप देखें कल का हाई है जी 240 के चार्ट पे बना हुआ, तो ES मैंने 20 पॉइंट रखा हुआ है, 20 पॉइंट का एक माइक्रो मेरे खिलाफ जाएगा $100, नहीं क्या $100, 20 पॉइंट $100 माइक्रो में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपने एक और मूव किया, एक और माइक्रो किया, वो मिडिल में आ गई $10 के पॉइंट में, इतनी होता ही है कि वो आपको 20 ऊपर जाती हाँ है, 10 आती है, आ जाती है। लेकिन एक और बताऊं, क्योंकि थोड़ा ब्रेक इवन के आसपास निकल जाओ या मिड बैंड, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि यस आपने बिल्कुल से करेक्ट। तो आपको लेकिन ये काम हम बाहर नहीं करवा सकते ना, अपने लिए तो कर सकते हैं। हाँ अपने लिए, लोगों के लिए स्टॉप लॉस लें, इट्स फाइन, बट खुद के लिए तो इट्स ओके। लेकिन ये वाला आप कैसे सिखाएंगे, जजमेंट कर सकते हो, नहीं सिखा भी सकते हैं कि अब होता कई दफा हुआ 6 माइक्रो के बाद ना मैं थोड़ा सा कंसर्न हो जाता हूँ 6 माइक्रो के बाद। हेलो सर, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू सर।
Long time. Yeah, I was very sick. Oh, feeling good now? Little bit. Okay, let's start again. Start coming in from tomorrow. That's why I come to me. I have so many problems to fix in my Big boss inside. like log into account. I check it yesterday. I see you have a what do you call WhatsApp message. You Yeah. have to do this that. Yeah. So yeah, is your Ninja working? I didn't open up. I just Okay, just open up first, then we could send you inside. Open it up. हाँ. आपको पता है 193 पे फिर आ गई है इतनी खुद मैं सारा दबा के मैं अपने चार जड़े गए गुस्सा काट उफ वही मेरे साथ ये जो 4 हैज हो गए तो $90 टाइम्स 4 9 मैं पूरे तो करके जाऊंगा जैसे कि मजाक थोड़ी है मैं दो नहीं ले रही आज आई नो सर वो क्योंकि 200 पॉइंट तो आ रही थी सर देखो तो रिजेक्शन हुई थी कल बहुत ज्यादा टेस्ट किया 197 200 अब एक दफा और टेस्ट करने आ रही है हाईएस्ट आज का है 209 इस वक्त आ गई है जी ऑलमोस्ट 200 अगेन इसको एक दफा तोड़ जाएगी ये मेरे नाल बड़ा धोखा है पिछले क्यों जी ईमेल पता किस दिन आई थी संडे शाम को सारा संडे मैंने 2 माइक्रो 197 से फेंके हैं लेट्स से 2 माइक्रो 209 है और सर मैं ना को लेने $72 और मेरा अकाउंट 4 प्रो मेरे खराब कर देते यार मैं बहुत लड़े हैं जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ नहीं नहीं जो मैंने ਉਹਨੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 8000 ਦਾ ਪੇ ਆਊਟ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈਜ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੰਜਾ ਦੀ ਸਾਰਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਨਿੰਜਾ नहीं नहीं मैं ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ मैं एडमिट करना अपना फॉल्ट लेकिन यार मैं 34 सेकंड ट्रेड में था मैंने कौन से बनाए अगर तो मैं बनाए होंगे मैं पूरा दिन फिर तो मैं मेरे ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਨ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਜਾ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ दूसरी मेरे को दूसरी तो मैंने किया ही नहीं ये तो आपने किया है जी नहीं बकायदा उन्होंने मैंने पॉइंट कट के दसिया है एक सेल ऊपर लो जी 213 आ गए 213 चल गई ऊपर ये ऑर्डर पे ज्यादा 240 ही लग गई 230 240 305 तो करांगे अब मैंने समझ नहीं आ रही लेके कौन उत्ते जा रहे हैं हां ये मीडिया ब्रॉडकास्ट जा रही है टेस्ला भी आ गया ना $20 तो $10 पे आ गया कैसा है 950 पे रिटर्न हो मैंने पता क्या किया मैं S1 पे पैगी 1 पॉइंट अच्छा लॉन्ग कर दिया ये तो अच्छे पैसे दे गया 216 ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 202 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਗਈ 3 ਮਾਈਕਰੋ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ आज प्लस आने शुरू हो गए देखो मैं नेगेटिव है ना पैसा ओवरलैप हाँ वो नहीं तो एक नेगेटिव ओवरलैप ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ बाकी पॉजिटिव ओवरलैप तो ठीक है क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है कि वो तो नाल चल रही है ना नहीं मेरा भी सर इन्नी मैंने गुस्सा चढ़िया 4 अकाउंटां ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 50000 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ 1700 ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸਰ ਪੂਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਚ ਹੈ
स्क्रीन में हूँ मैं 72 कढ़ने ताकि मैं एक प्रो लवा ना जा अच्छा मेरे को कुछ पास हुए पे ने तो वो मैं हेलो जी हाँ जी बताएं हाँ आपका लॉगिन कर आपने वो आई क्लाउड ड्राइव रखा हुआ है क्या एरर क्या दे रहा है करते हैं ना हाँ। उसके बाद कुछ आ जाते हैं करो वाईफाई करो लगा दो तुसी वाईफाई कौन सा लगाया आपने हाँ लेकिन पहले ट्राई करें मॉर्निंग नहीं ये उन्होंने दिखाना है आपको शायद सारा निंजा वाइप आउट करके करना पड़े क्लाउड ड्राइव की वजह से तो ये मसला हुआ है हाँ जी उधरों कुछ 1000 पॉइंट गिर जाए मजाक कर रहे हैं यस Change the internet settings. yeah no same win lifetime It's asking the password. yeah so 2 win lifetime 2601 601 It has automatically connected before. yes but now we changed No, it's the like password is incorrect. yeah win lifetime 2601 क्योंकि 12 बजे वाली कैंडल हुन बन गई ना हुन इन्हें जहां बनन लग गई ना पूरे 12 बज गए हुन थोड़ा जा तो इन्हें रिट्रेस देना ही है यार कितने 192 91 88 तक गई You change your office now there. yeah my job they demoted me they promoted somebody else just kidding beginner advanced and intermediate 3 levels now if you don't know how to buy how to sell you don't see me Online. even you can listen to online but you need to know what you're doing if I ask you 60-minute has a divergence pivot point is this put it sell like this is how I trade I always like today NASDAQ pivot is 25075 25180 if you're asking what to do you're not ready for my class you go to beginner Miss Tulip number 1 you need to know buy sell buy when you graduate from this 1 week you go to the next room you go to level 2 which is Mr. Vikram can you take a mid-band trade or this once you kind of understand the whole system then you can ask me some advanced questions so we have now structured the company differently because you took Daniel's 4 classes and all of a sudden you were thrown into me and then market will eat you alive if you don't know the basics right so now we say no more sitting in that room first you're going to sit with Miss Tulip for a week and learn the basics buy sell buy then you graduate and we'll put you with Mr. Vikram if you understand what he is doing then you come and see me So online we can. you can join anybody no problem Is there now different? yeah we have 7 or 8 streams now So when I put the. Yeah, can you see what is the problem I'm doing? It's not taking. you are connecting to SuperAreas.com okay that's a different ID super AREAS let's try now sorry yeah Okay, now वाईफाई चल रही है उत्थे ही खड़ी है 200 तक So I got SuperAreas.com. Yes. My account or what? yeah what are you trying to do I want to. log in okay log in
Oh, okay. Okay, yeah. Now totally changes everything. Yeah. So do you have a Google configurator? I don't have it, just like in here. Okay. So mobile पे कर देना. Mhm. Can you give me the phone? I only do the computer. Huh? Okay. I just need a 1 second. Download. No, I want to download here because sometimes I want to do everything in the laptop. Everything on Google. Authenticator only phone, but you need to do it one time on the phone to be able to do. It's called two-factor because code is generating on the phone. See, but here we see, look, I know, no. You have to scan it one time. You have to. He's gonna do it for you. No. no. The same ID, there's one. Oh, wait. Okay. Ask the code just for this one. Okay. Wait. Just click here. Yeah. 9, yeah. 97 6 2 5 2. Okay. Click. Yeah. नहीं जा रहा जो वाले Yeah. दो सौ 17, 18, 19 Yeah. खिंच रहे हमारे. So now I can. Now you log in. Okay. So before we log in, I can see the trading, everything. And Yeah, it's a new website now. It's completely different now. so his lecture video, everything. Yeah, it's all there under Trading Academy. Yes. Yes. Click over it. Click here. Yeah, No, Trading Academy. I did it. What is this? Hello. I didn't mean. चलेगा Study material. Here. All the video here. Okay. So everyone, you before when you take the session every day, it was recorded, right? Yeah, it's still So recorded. never, how many days record you can study? 1,000 days. So You will need, remember, everything to record is you need to pay attention to what I said, right? so So how much time you want to go back? Why? let's say here, today's class, today's session. Now everybody else doesn't go uploaded. Only the person who is teaching and it's live. Only mine gets recorded. So I mean, I said like before you did the class today in a session. Yeah, it's recorded. So I can review it. After. Yeah, you can do it, no problem, every day. So now this is the study material. This is the study material for Daniel's 5 lectures, and then mine that I do daily.
But if you're watching Mr. Vikram, Miss Tulip, Harneet, I have 8 mentors now. No, I want to go stick on with you. No problem. So go on YouTube channel, and my previous recordings are there since last 1 year. Which one? The next seminar is next. No, I wanna go through because long time I'm out of. Yeah, but first visit Daniel's 4 lectures. I at the same time. Yeah, YouTube channel ਤੇ live ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ. Oh, not in there. YouTube channel. Homeownership is one of life's most important milestones, and with it comes the responsibility of protecting your investment. Homeowners insurance and property protection are essential components of this responsibility, providing financial security against unexpected events such as natural disasters, theft, and liability claims. Without the right coverage, an unforeseen accident or disaster could lead to devastating financial loss. So that means YouTube anybody can access. Yeah, it's after, not live, but anybody can access after. Okay, so let's say tomorrow, if when you start the 9 o'clock, right? How can I go live? Okay. Come here. SuperAreas. SuperAreas. Okay. Okay, fine. Okay, home page. Homeowners insurance also covers personal belongings inside the home, from furniture and electronics to clothing and appliances. This ensures that if your possessions are stolen or destroyed, you won't have to shoulder the full burden of replacement. This was there, Mr. Rafay. Okay, live stream. Tell her, yeah, my live is still on. Okay. All right, guys, 12:10, and I gotta go and enjoy. Okay. So this is Enjoy. the See you guys. live one. I want to go back and do it. Then Zoom session. Zoom session. And like we are 8 mentors. It's Rafay, happy. Now I need to make it 6. Oh. Okay. This is the thing, and then how study material. Studying details here. Trading Academy. Better. Then if I want to go previous thing, Yeah. YouTube. YouTube.